क्या हालचाल दोस्तों। इट्स बीन अ व्हाइल आई नो, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। सम थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, बट व्हाटएवर, here we are reviewing the Maono A04 condenser microphone. I've been looking for this for quite some time, and I was pretty confused between this HyperX Solocast 2 PD200X or SL40. I needed something like मैं गेम वॉइस ओवर्स करने के लिए या लाइव स्ट्रीम करने के लिए, थोड़ा बहुत म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा कुछ माइक ढूंढ रहा था, एंड आई गॉट दिस suggested. There are pretty much so much review on the internet. I find about this model, just the Maono A04, not Gen 2, Yeah. and it was quite okayish. I think people were like acknowledging its price to performance, but there is some issue with the first gen. It was catching some background noises in the review I found. तो आज मैं चेक करने के लिए खुद ही मंगा लिया इसको। वीडियो भी शूट हो रहा है, रिव्यू वगैरह आएगा चैनल पे। सो व्हाई डू आई पिक दिस, यू मे आस्क। द थिंग इज, इस पे I need something like, my budget was tight. I had something like 4,000 to spend on a microphone, and I needed something that's like providing me value for my money, and I think this is, and I'm pretty much happy about this. It's an XLR and USB connection microphone, and yeah, the software is quite good. I'm recording the software right now. It's quite good. You can hear this. I will export it after the video and edit raw. And keep in mind, my fan and my AC is turned on, and there is no effects. You can see there is no noise cancellation. It's my raw audio without any processing. So, specs aside, I think this could be the best microphone someone can buy at this moment. And the full kit is what makes it so much valuable. मैंने ये HyperX Solocast 2 भी देखा था, मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन रिव्यू देखने के बाद मेरे को लगा ये मतलब उतना इसका नॉइज सेपरेशन उतना अच्छा नहीं है। लाइक बैकग्राउंड में थोड़ा भी कुछ साउंड ऑडियो आएगा ना तो वो कैप्चर कर लेता है। So I did order it, but I cancelled it at the last moment. I think it's not worth it. Yeah, like they are saying it has something like this pop filter and shock mount built inside it, but I don't think it's worth the money, bro. Like, you are spending what? Spending like for 4,000, 4,500. I don't think it's worth the money, bro. So I had another microphone on my watch list. It's like the Mono PD200X, and I will be honest, bro. The YouTube is filled with review from this microphone, bro. मतलब YouTube में हर एक बंदा इसको बोल रहा है अच्छा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज लाइक दिस माइक्रोफोन हैज लाइक द 4,000 इज फॉर दिस माइक, ब्रो, नॉट एनीथिंग, no shock mount, no nothing. For to get the full kit you have to spend like 5,000, 4,800, something like that. I don't think that's worth it. And I needed a condenser microphone. Like, dynamic mics are okayish. Okay, it's like good for recording and all, but I don't think it will be good for like recording voice depth. You see what I mean? Like, I needed actual voice depth to edit and work around. There's another microphone. There's like FDUCE SL40, and this microphone, brother, like the whole YouTube is like crazy about this microphone. They like comparing this with the what's that called? MV7, bro. That's like this microphone. Yeah, comparing this with this, bro, like crazy. And I think like it's justified, but you need the XLR cable and interface to get the most out of it.
So I don't think I have the budget for now. So I chose this. And yeah, this sounds pretty good. This is how the setup looks like after assembling the mic. And please don't judge my wire management. I know it's bad, but yeah. So अभी तक मैं वीडियो के आगे जो भी आपको आवाज़ आ रहा था वो इस माइक के थ्रू ही आ रहा था while I was using the windscreen, as you can see in this setup. But now I am speaking through the pop filter without the windscreen. So you guys will get an idea how it sounds like. एक साइलेंट टेस्ट कर लेते हैं. Let's see. So I don't think the mic captured any sound in between. और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो बिना किसी पॉप फिल्टर या विंडस्क्रीन के आ रहा है, जैसे आप देख सकते हो. मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ये माइक आप ऐसे एकदम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही साउंड एज ए प्लोसिव्स कैप्चर होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग अ प्लोसिव टेस्ट. लाइक आई एम स्पीकिंग सम प्लोसिव वर्ड्स लाइक पैट, किड, बैग, प्लोसिव्स. आप सुन सकते हो लाइक इट्स माइक फट रहा है बहुत. सो आई रिकमेंड यूजिंग द विंड स्क्रीन और एटलीस्ट द पॉप फिल्टर to get the best sound. And yes, about the software, this is arguably one of the finest software you can find for a microphone. Like इस पे आप EQ लगा सकते हो जैसे आपको करना है. इधर कुछ प्रीसेट्स भी है, मैं आपको सुनाई देता हूँ. लाइक दिस इज माई ओरिजिनल वॉइस विदाउट एनी EQ. दिस इज द रिकॉर्डिंग EQ. सो अभी आप जो सुन रहे हो रिकॉर्डिंग EQ के थ्रू आ रहा है. Do let me know how it sounds like. And like podcast, this is the podcast graph you are listening currently, and this is the live stream graph you are currently listening, and this is the gaming graph. Like आप जब लाइव स्ट्रीम करोगे या गेम खेलोगे तब आपके दोस्तों को आपका ऐसा साउंड आएगा कुछ. ओके, लेट मी ट्यून इट बैक टू ओरिजिनल. सो यस, दैट्स इट. इस पे आपको कंप्रेसर भी मिलता है या लिमिटर भी मिलता है. मेरे को उतना कुछ आता नहीं है अभी तक यूज़ करना. आई एम लाइक लर्निंग. सो वट एवर यू आर लिसनिंग इज रॉ, अनएडिटेड एंड विदाउट एनी नॉइस कैंसिलेशन. मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे पीछे दो पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, एंड आई लिव नियर हाई रोड. सो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस माइक का साउंड आइसोलेशन बहुत ही अच्छा है. हाईली रिकमेंडेड. और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो मैं अपनी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ. बैकग्राउंड में फ़ैन चल रहा है. एंड मैं इस ऐप से ट्राई किया उसको कनेक्ट करने के लिए, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में प्लग किया टाइप सी को अपने फ़ोन में, इसमें दिखाया मेरे को, मतलब मेरा माइक को रिकॉग्नाइज़ किया फ़ोन ने, लेकिन इधर कुछ नहीं दिखा रहा. पता नहीं क्यों, मे बी इट्स अ ग्लिच और समथिंग, बट दिस इज़ द ऑडियो डायरेक्टली फ्रॉम द फ़ोन. सो फाइनल वर्डिक्ट, 4000 के बजट में दिस माइक्रोफोन इज़ लाइक सो मच वर्थ इट. आप इस पे वॉइस ओवर्स, म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकते हो इजीली. और कंडेंसर माइक्रोफोन एनी डे एक डायनेमिक माइक्रोफोन से बेटर होगा. सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर दिस, सेव सम मनी. एंड एक और चीज़, मोबाइल के लिए आई थिंक दिस माइक्रोफोन इज़ नॉट सो गुड. So this was the review of Maono A04 Gen 2 condenser microphone. This is my channel. In future, I will be uploading so much content. So stay tuned. और अभी थोड़ा जुकाम है, so don't mind my voice. It's bad. But yeah, see you on the next video.